चलो तो आज का टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मींस बेसिक फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका डिवीजन नहीं होता है, हम लोग इनवर्स निकालते हैं। एक्चुअली इनवर्स अभी नहीं सिलेबस में, अभी खाली तीन चीज देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये तीन चीज देखेंगे एंड आउट ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा टेक्निक अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज वेरी मच इजी। ओके, तो एडिशन कैसा होता है? सी सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 4 and B is equals to suppose -1 2 3 14 3 and 14. Now it is asked to find A plus B and it is asked to find A minus B. तो कैसे निकालोगे? नंबर वन, see to find A plus B, what I'll write 1 2 3 4 plus -1 2 3 and 14. Okay, now करना क्या है? Corresponding elements are added or subtracted. In addition or in subtraction, corresponding element of the matrices are added or subtracted. मतलब जब एडिशन करोगे तो ये बनेगा 1 plus -1, सेकेंड एलिमेंट इसका और इसका सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ऐसा होता है 2 plus 2, then this will be 3 plus 3 and this will be 4 plus 14. Whatever answer you'll get, that is the final one. 1 plus -1 is 0, 2 plus 2 is 4, 3 plus 3 is 6, 14 plus 4 is 18. This is the result of A plus B. Corresponding elements are added. Now, similarly, we can do bit 2. Bit 2 is A minus B. तो वैसे ही करना है, A मैट्रिक्स विल राइट, B मैट्रिक्स we will write, and दोनों को माइनस करोगे, मतलब corresponding elements 1 minus -1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, 2 minus 2 0, 3 minus 3 is 0, 4 minus 14 is -10. Okay, this is the result of A minus B. समझ में आ गया एडिशन कैसा होता है, मल्टी सब्ट्रैक्शन कैसा होता है? Now one thing you can notice here, if we do A plus B and if we do B plus A, both will give the same result. अगर A plus B कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? 1 plus -1 करोगे। अगर B plus A करो तो -1 plus 1 करोगे, both will give the same result. मतलब A plus B is equal to B plus A, means addition is commutative. याद रखना, addition is commutative. Okay. Similarly, addition is associative. Associative means A plus B पहले करके फिर C को ऐड करोगे, जो आएगा A plus B plus C करने से भी होगा। मतलब यहाँ पे A plus B को पहले ऐड करो, एक मैट्रिक्स आएगा, that you will add with C, something you will get. दूसरा केस में पहले B plus C को ऐड करो, जो आएगा उसमें A ऐड करो, whatever you will get, both will be the same thing. Hence we can say addition is commutative as well as it is associative. But subtraction is not. Subtraction is not. A minus B not equals to B minus A. Because when you subtract, things are not the same, na? Because if you do 5 minus 2, it's 3. But if you do 2 minus 5, it becomes -3. Hence magnitude is same but with a negative sign. The thing becomes one negative. So we cannot write A minus B is equals to B minus A. हाँ, we can write A minus B is equal to negative of B minus A. That's correct. इसीलिए लेकिन A minus B B minus A तो नहीं है, जैसे यहाँ पे हो रहा था A plus B is equals to B plus A, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative. Okay. Now multiplication में, in multiplication there are two things: multiplication of a scalar with a matrix, multiplication of a matrix with a matrix. Okay, multiplication of a scalar with a matrix, scalar means a single number, and multiplication of a matrix with a matrix, which is the second part. That's little bit tough. हम लोग पहले वाला देखेंगे, multiplication of a scalar with a matrix.
suppose we have matrix A is equals to P, Q, R, S, and if we multiply K, suppose K is a number, okay, K is a number. If it is asked to find K into A, what I will do? K multiplied with P, Q, R, S. Now when a scalar is multiplied with a matrix, that scalar number is multiplied to each element of the matrix. So the final answer will be something like this: Kp, Kq, Kr, and Ks. Okay. Whenever a scalar is multiplied with a matrix, that particular scalar is multiplied with each element of the matrix. Now इसको देखने के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं. Question number 1. Question number 1. Now see, in 1, it is asked to find A is given, B is given. It is asked to find 2A minus 3B. Now 2A minus 3B means 2 whole into 1, 5 minus 2, 3 minus 3B, 3 whole into 0 minus 1, 4 and minus 7. Now see, this will become 2 ones are 2, 2 5 10, minus 4, 2 3 6, minus 3 zeros are 0, 3 into minus 1. See, minus is there, do not multiply minus 3 with minus 1. Minus is there, I am multiplying 3, only plus 3 with minus 1, this will be minus 3. 3 into 4 is 12, 3 into minus 7 is minus 21, which is equals to 2 minus 0 is 2, 10 minus minus 3 is 13, minus minus is plus, 10 minus minus 3 is plus 13, minus 4 minus 12 is minus 16, minus 4 minus 12 is minus 16, 6 minus minus 21, 6 minus minus 21 is plus 27. ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा 2, 13 minus 16 and plus 27. Then comes question number 2. Into this equation is given and it is asked to find x, y and z. Now see, 2 is a scalar quantity multiplied with the matrix. What I can do is multiply 2 with this particular matrix. तो क्या बन जाएगा? 2 into 3 is 6, 2 into x is 2x, 2 into 0, 0, 2 into 1 is 2, plus 3 into 1, 3, 3 3s are 9, 3y, 3 2s are 6 is equals to z minus 7, 15, 8. Okay, now see, this will become 6 plus 3, 9, 2x plus 9 is 2x plus 9, 0 plus 3y is 3y, 2 plus 6 is 8. This matrix is equals to z minus 7, 15 and 8. Now we know if two matrices are equal, their corresponding elements are also equal. It means 9 is equal to z. First answer we got, z is equal to 9. It means 2x plus 9 is equal to minus 7. 2x plus 9 is equal to minus 7. Now solve it. 2x is equals to minus 7 minus 9 is minus 16. X is equals to minus 8. Then 3y is equals to 15, which means y is equals to 15 by 3, that is 5. And 8 is equals to 8. So we got the values, okay? X is equals to minus 8, y is equals to 5, and z is equals to 9. Then the last one. Question 2, then 3. See, A is given, B is given. We have to find matrix X such that 2A plus 3x is equals to 5. तो मैं क्या लिखूंगा? 2 whole into matrix A. 3 minus 4 0 1. 3 minus 4 0 1 plus 3 into matrix X. Matrix X we do not know. Matrix X is equals to 5 into B. 5 into B. B is 0 to 3 minus 1. So this is 0, 2, 3 and minus 1. Now ये हो जाएगा 2 into 3 6, 2 into minus 4 minus 8,
2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, plus 3x is equals to 5 into 0 is 5 into 0 is 0, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 minus into minus 1 is minus 5. Okay, now just have to solve it. कैसे? 3x is equals to, यहाँ पे देखो 0, 10, 15, minus 5. This matrix will go to that side. जैसे इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व होता है वैसे वहाँ पे जाके माइनस बन जाएगा ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स उस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा. This will be 6, minus 8, 0 and 2. Now which will imply 3x is equals to 0 minus 6 is minus 6, 10 minus minus 8, 10 plus 8, 18, 15 minus 0, 15, minus 5, minus 2, minus 5, minus 2 is minus 7. ठीक है, minus 7. Now this will imply x is equals to 3 multiplied होता है divide 1 by 3 multiplied with minus 6, 18, 15 and minus 7. So this will imply x is equals to 1 by 3 into minus 6 is minus 2, 18 by 3 is 6, 15, 1 by 3 into 15, 1 by 3 into 15 is 15 by 3, that is 5, 1 by 3 into minus 7, minus 7 by 3. ठीक है, ये होगा आंसर. मैं एक चीज बताना भूल गया था, इधर सही है. Now matrix added or subtracted, whatever, addition or subtraction, not point, addition or subtraction can be done if the matrices are of same order. Order should be same. Two different orders matrices cannot be added or subtracted. Okay, बस इतना ही याद रखना. उसके बाद आता है multiplication of a matrix. Then it comes multiplication of a matrix with another matrix. Multiplication of a matrix with another matrix. Okay, multiplication means थोड़ा सा अलग टाइप का है. In matrix multiplication, row ऐसा नहीं, elements of the row of first matrix is multiplied by the elements of the column of second matrix. ठीक है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है. रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन. नाउ वन थिंग रिमेंबर, for two matrices to be multiplied, number of columns of first matrix, number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. Very important. For two matrices to be multiplied, number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. ठीक है, टाइम देखिए अच्छा हाँ है 5 मिनट. Number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. Very important. Means suppose एक मैट्रिक्स A है, कुछ भी एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, and if I have to find AB, let order of A is m cross n.
let then order of B has to be n क्रॉस a नंबर p, इस तरह होना चाहिए। मतलब पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर ना n क्रॉस p होना ही चाहिए। सी फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, और मैंने बोला अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कितना कॉलम n तो कॉलम्स है, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, तो यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तब भी जाके पॉसिबल होगा, तब भी जाके पॉसिबल होगा। Now if you see A into B, if I find A into B matrix, number of rows is A first matrix है, देखो ये first matrix, ये हो गया second matrix, okay? Now number of rows of first matrix is n, number of columns of first matrix is n, and number of rows of first matrix is n. It means criteria is fulfilled, number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix, means AB multiplication is possible. But if it is asked to find BA in this configuration, BA जब करोगे ना तो क्या होगा, n into p और ये हो जाएगा तुम्हारा np और ये है mn। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज p, नंबर ऑफ कॉलम्स इज p, एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इज m, नंबर ऑफ रोज इज m। p और m तो यहाँ पे इक्वल नहीं, दो अलग अलग नंबर लिया हुआ है, तो क्या BA मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे कि नंबर में होता है, जैसे कि 2 into 5 is 10 and 5 into 2 is also 10, मतलब नंबर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। A into B may be equal, कभी कभी may be equals to B into A होता है, लेकिन not always। Maximum of the times you will get A into B is not equals to B into A। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि A into B प्रोडक्ट पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, B into A जैसे कि यहाँ पे हुआ पॉसिबल नहीं हो सकता है। Sometimes it may happen A into B is possible, B into A is possible, both answers you will get, but both will not be same, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं AB and BA is not commutative। Now after understanding all this, एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आता है, ठीक है। लिख लेना अच्छे से, मिटा रहा हूँ। क्राइटेरिया, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर इस तरह m into n, n into p। नाउ कैसे होता है, which kind of multiplication is this? It is the multiplication of row to column। तो ये एग्जाम्पल, suppose A is equals to 2 minus 1, 1 and 3, B is equals to 4 minus 2, minus 3 and 5। Okay, now it is asked find AB, find AB। चलो देखते हैं, AB means I will write in this way, A is 2 minus 1, 1 3, B is 4 minus 2 minus 3 and 5। अच्छा, ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, रो टू कॉलम, रो एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम, मतलब ऐसा होगा, रो एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद कॉलम एलिमेंट्स, these 2 and minus 1 will be multiplied with 4 and minus 3, ठीक है। फर्स्ट रो एलिमेंट्स will be multiplied with फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स। नाउ कैसा करेंगे, देखो साइड में, सी टेक्निक्स, 2 into 4, 2 into 4 plus minus 1 into minus 3 plus minus 1 into minus 3। ओके, मतलब फर्स्ट रो फॉर, देखो this is a 2 cross 2 matrix, answer will also be 2 cross 2, answer will also be 2 cross 2 matrix। now चार एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार एलिमेंट्स होंगे। now in these 4 elements, 2 into 4, in these 4 elements, first element can be found out, okay, first element 3 minutes, first element can be found out 17 सेकंड 15 सेकंड, sorry